तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। Let us resume our discussion on Sri Ramakrishna's spiritual discourses with his intimate devotees in the Dakshineshwar temple premises on 27th of December 1884. This being a Christmas season in that year, many devotees from Kolkata came around him, and there was a very rewarding spiritual interaction, discourses. The recorder of the Gospel, have given a graphic description of the event. It is recorded in the second volume of the original Bengali presentation, Sri Sri Ramakrishna Kathamrita, 222 under section 4. And it is in chapter 105 of the second volume of the Hindi translation, Sri Ramakrishna Vachramrit, 205 and 4. And under chapter 32 of the chronologically presented English translation, the Gospel of Sri Ramakrishna. Am I audible? आप लोग सब सुन रहे हैं परिष्कार? कोई तकलीफ तो नहीं है? Now, though Sri Ramakrishna is, with very simple words, he is saying something, but it has very deep spiritual significance. So when we study this book, we should be extremely alert, careful, because this is not an ordinary book. This is the words of God. So, when God speaks, He speaks from a different level, and that has a very deep spiritual significance. Everything what He says, not only His words, His attitude, His behavior, His even hints, indications, उनके इशारा से ही अनेक कुछ बोल देते हैं. तो वो सावधानी से ये किताब को ध्यान करना जरूरी है. Now we ended the topic that Sri Ramakrishna says that I keep all types of attitudes with me, so that devotees of different temperaments can come and get their satisfaction from me. It's a very unique feature of Sri Ramakrishna. You have to understand what he's saying. Usually we call on God with one particular attitude. Some are devotees, some are following jnana, some following karma. Different paths are there. We know that the goal is one, there may be various ways. So when we follow a particular way, then those who follow that particular method will be getting some benefit from that saint. But those who are not, for them it is redundant. Those who are devotees, they will not get much benefit from people who adhere to knowledge. Those who are calling on God, formless aspect of God,
and those who are calling on God with form, there are two different channels. Each one is different. So one is Advaitin, one is Dvaitin, one is Vishishtadvaitin. Various methods are there. Each is following different methods. And they are disjoint, they are different. They meet only at the end, not while traveling. But Sri Ramakrishna is a person who's not only at the center of everyone, he is in the periphery of everyone also. He is carrying different devotees from different standpoints. Wherever they are, he is not calling them to follow one particular method. Let each one of them follow their particular method, and they will see that Sri Ramakrishna is there wherever they are. That is the special feature, and that's why Sri Ramakrishna says, I cater to the demands of all the people, of all temperaments. So he is an universal God. He is meant for all. Sarva Dharma Swarup, Sarva Dharma Prakashaka. He is the God of all. Everyone gets their help from him, irrespective of whatever method he is doing throughout the world. He is the world teacher, not a particular nation or a particular community. This is his special feature. But having such a large horizon in his personal life, how he is so meticulous of his surroundings, that is to be noted. That is important here. He was having this spiritual discourse under the branch of a tree, Panchavati, the banyan tree in Dakshineshwar, where he was staying. It's a huge banyan tree. Underneath the tree there was a platform where he was seated, and the devotees sat around him and they had a conversation. After the talk was over, everybody went for a stroll or seeing a temple. He also returned to his room. Now while returning, he noticed that his personal effects were lying there. Nobody took care. That his water pot, other personal items which he carried, it was spread around him. When everybody left, everybody forgot about them. Now that is our problem. We are not very alert of our surroundings. When we are engaged in spiritual discussion, spiritual thoughts, we think that we have transported to some other realm and we become oblivious of our surroundings. This is an important lesson Sri Ramakrishna is giving. Spirituality does not mean that you forget the reality. Spirituality is not something which is beyond the world. While remaining in the world, being extremely attentive of all your surroundings, you should go beyond the world. This is the teaching. You need to stay in the worldly level, but you cannot ignore the worldly realities. Here everybody ignored. They was not careful. So Sri Ramakrishna is instructing them, go back, collect those items and bring it for me, because they are necessary. When you go somewhere, we keep some of our belongings and we forget about it, and somebody else helter-skelter goes. This is not the spiritual life. Spiritual life does not mean that you become indifferent of the environment of the world. You have to be extremely practical, very, very conscious about your surroundings, extremely attentive, as has been demonstrated by Holy Mother Sri Sharda Devi. She was a
that at the pinnacle, at the summit of spirituality, आध्यात्मिकता का शिखर में बैठते थे, at the head, top of spirituality, Sri Ma Sharda Devi, his divine conscience. But in our real life, she was extremely practical, extremely attentive to her duties and responsibilities. That is the practical spirituality. Sri Ramakrishna is instructing these people, and now we find here a few of the master's personal things lay scattered on the cement platform of the Panchavati. फेंक के भागा सब, जैसे होता है हम लोग जाते हैं, सामान वामान रखते हैं, चले जाते हैं, सब भूल जाते हैं. भूलने से आध्यात्मिकता नहीं होता है. If you are, Sri Ramakrishna is to teach, if you are not mindful about your environment, how can it be mindful about God? Mind is one. If mind is not disciplined for your work, then that mind cannot meditate either. We sometimes think we have become very, very highly spiritual, so we need not be so careful about our work. Your degree of concentration in meditation is reflected by your efficiency in work. Your work, personal work, whatever duties we are doing, the attention, that efficiency, that performance will dictate how successful we are going to be in our spiritual life. This is a practical demonstration. Here Sri Ramakrishna is saying that everything is less scattered all around. And he asked him to bring them. He proceeded to the room and the devotees followed. यहाँ पर जो लिखा हुआ है, अंग्रेजी में उसको संक्षिप्त कर दिया. श्री रामकृष्ण ने मास्टर से कहा, वो डब्बा पान का डब्बा था, सिंपल थिंग, फेंक के चले आए. टॉवेल, सो वाटर पॉट, कौन ख्याल रखते हैं? बेख्याली होने से आध्यात्मिकता बनता नहीं. वो डब्बा और क्या क्या है कमरे में ले आओ. ये कहकर श्री रामकृष्ण अपने कमरे में चलने लगे. पीछे पीछे भक्त भी आ रहे हैं. किसी के हाथ में पान का डब्बा है, किसी के हाथ में गड़ुआ आदि लेके जा रहे हैं. द मैटर इज वेरी ट्रिवियल, सिंपल, but the message is deep, that we should be very, very attentive and careful in every moment of our life. Every moment of our life is precious. If you are unmindful in any moment, we must be remembering that those moments will also be lost in during our meditation. In meditation we require a continuous flow, निरंतर भगवान का चिंतन होना चाहिए. Continuous flow of thoughts towards God. If your flow of God is discontinuous in your work, the same mind will follow you. How can you have a continuous flow of mind? That you are able to continuously think of God should be proved. Your continuous attention to your work. Work will dictate. So Sri Ramakrishna is teaching and training his devotees, be mindful. Having gone there, he took a little rest, and then a very, very significant question was asked. Now, this is something beyond the grasp of scientific thoughts. Sri Ramakrishna is saying something which is beyond our worldly knowledge. This is something अलौकिक ज्ञान. ज्ञान दो किस्म होता है, एक भौतिक ज्ञान, एक अलौकिक ज्ञान. एक पराविद्या, एक अपराविद्या. In the Upanishad it has been said, Dve vidye veditavye, parachaiva paracha.
the two branches of learning. One is secular knowledge and the other is spiritual wisdom. This should be very clear. One is भौतिक ज्ञान and दूसरा पारमार्थिक ज्ञान. A bird must fly on two wings. पंछी का दो पंखे होते हैं, एक पंखे से उड़ नहीं सकते हैं. We cannot fly on one wing alone. Birds cannot fly on one wing alone. Similarly, in order to progress in our life, we have to cultivate both our wings. One is secular knowledge and is spiritual wisdom. Unfortunately, in our educational system, there is no provision for developing our spiritual wisdom. Our life is truncated one way. हम लोग शिकार बन जाते हैं. We become victims of our educational system. There is no provision of having any exposure for spiritual wisdom. What is the difference of secular and spiritual? The wisdom, the knowledge we get of the external world around us, the world which we can interact with eyes open, आंखें खोलकर जो दुनिया दिखाई पड़ता है उसका बारे में जानना ही भौतिक ज्ञान है. But that's not all. We think that's all. That's not all. That is only a part of the entire knowledge system. The majority of our knowledge system is in the internal world. As we have an external world with eyes open, when the eyes are closed, आंखें बंद करके एक दूसरा दुनिया है. ये दूसरा दुनिया भी है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है. इसका मतलब नहीं है कि नहीं है. उसका बारे में जानकारी को कहलाता है पारमार्थिक ज्ञान. That is also necessary. We are human beings. We must have an access of both. It's unfortunate that one section is completely closed. That's why the Upanishads, from thousands of years, they are shouting, Devidya Veditavya, please be alarmed. You have to master two dimensions of knowledge. Paravidya and Aparavidya. Paravidya is spiritual wisdom, Aparavidya is secular knowledge. We mastered whatever science, philosophy, arts, geography, history, everything belongs to secular knowledge. But then what is this spiritual knowledge? To know about ourselves. We know the world, the subject, but we do not know the knower, the object. हमें अपने बारे में कुछ जानकारी नहीं है. मैं दुनिया के बारे में जान लेते हैं. We have no knowledge about ourselves. Who are we? The eye does not see the eye. The eye sees the world around. When the subject focuses his attention to oneself, there the spiritual wisdom starts. The knower is to be known also. The question was asked, Vigyata Ramare Kena Vijaniyat. How the knower can be known? We are knowing everything because we are subject. We know the objective world. But how about the subject? We should know about ourselves also. Who are we? What is our dimension? What is our scope of the achievement? There nothing is known. Know about this is called spiritual wisdom. And the question is that whatever knowledge, our instrument of knowing is there, that is for the external world. We have the knowledge, we have the intelligence, we know the world, we have the sense organs. Chakshu Kanna Nasika Jiva Taka, we can see, we can hear, we can verify, collect data. So that is this jnanam, knowledge. The question is here very clear, sir, can one know God's attributes through this intellect? Now, this world is there and we are the knower of the God.
now there's another aspect is coming, God, the creator of the world, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है. We believe that if there is a creation, there must be a creator. Nothing can fall from heaven. From when there is a machine, there must be a mechanic behind. So this world has been created, and we say that there must be a God, that be Mr. X, God. Now, since we have many attributes, many qualities, the God must be having some attributes. What are his attributes? How can we know? The question is, can we know by our this intellect? In order to know something, we have our mind. And the faculty of the mind which identifies things, that is called intellect, buddhi, nirnay lete hain. The decisive factor of our mind is called intellect. By intellect हम सब कुछ जान लेते हैं, लेकिन सब कुछ भौतिक जानते हैं, पारमार्थिक नहीं. जो अलौकिक विद्या है, इस बुद्धि से जाना नहीं जाता है. वही प्रश्न है, can one know about God through this buddhi? Sri Ramakrishna says, certainly not. Very bold answer. Certainly not by this intellect. There is a jolt we get, great jolt we get, but the intellect with which we boast so much, हमारे गर्व है, हम सब कुछ जान लेंगे, दुनियादारी जान लेंगे, हमारा गूगल है, इंटरनेट है, सब कुछ जानेंगे, लेकिन इसके बारे में, भगवान के बारे में कुछ नहीं जान पाओगे. It is completely ineffective. कहा गया है, महाराज ज्ञान के द्वारा क्या ईश्वर की गुण समझ जाते हैं? श्री रामकृष्ण ने कहा, वे इस ज्ञान से नहीं समझ जाते. होगा नहीं तो कैसे होगा? एकाएक क्या कभी कोई उन्हें जान सकते हैं? इट्स नॉट सो इजी. यू मस्ट अंडरस्टैंड, इट इज नॉट समथिंग about some physics or chemistry or any data, geography, that you make some appeal and do some research and get. It is not so easy. Is Brahma Vidya hai, is extremely intricate, and we have to first understand that it is not so easy job. इसको हल्कापन से मत लिया जाए. आध्यात्मिक जीवन को हल्कापन से नहीं लिया जाए. ये कोई मजाक का चीज नहीं है. ये ज्ञान से आप ईश्वर को नहीं जान सकते हो. तो ये ज्ञान पाने के लिए क्या करना पड़ेगा वो भी बताएंगे. Certainly not by this ordinary intellect can one know God so easily. ये पहले ये क्वेश्चन देते हैं, भगवान को इतना आसानी से नहीं जान सकते हो. उसको क्या करना पड़ेगा? One must practice sadhana. Intense effort is necessary. That we understand. For anything, even in secular knowledge, we have to spend lot of time, lot of energy, lot of interest to know anything. So here also it is understandable that we need sadhana. But is sadhana enough? Is that all? I said no. Not only sadhana is necessary, but beyond that, one must also adopt a particular attitude towards God. For instance, the attitude of a servant towards his master, and the attitude of rishis of old had the attitude of Shanta. We know there are 5 attitudes one person can establish in the Bhakti Marga. So here Sri Ramakrishna says a very, very important message. This is God. God's words are infallible. Now, in order to know God, we must have bhakti. Bhakti cannot be denounced. Some people say that we do not belong to the bhakti school. We are jnanis. We want to mentally cogitate and to think about Brahman and Jeev, and by intellectual analysis we can know God. That's impossible. In order to know God, one must have sadhana
In addition, sadhana means spiritual practice as per his own discipline. That is subjective. You can choose any spiritual sadhana, any method to know God. On top of that, another thing is necessary. You must attach yourself with God. You must have a personal relation with God. एक खास बात है, भगवान के साथ एक रिश्ता बनाना जरूरी है. इसको भक्ति कहलाता है. भक्ति के साथ, भक्ति मतलब टू लव गॉड. गॉड इज आवर क्रिएटर. That he has two dimensions. One is Nirakar, formless. Another is the Nirakar, infinite God takes a Sakar form. The infinite God condenses him, concentrates him to a particular finite form. Now this is a perennial discussion how the infinity is condensing to a finite object. It cannot be explained. It's beyond the explanation. That's why he says God cannot be understood by this intellect. वो हमारे मन और बुद्धि के पारे है. How the infinite God is concentrating into a finite form, and you are saying both finite and infinity are same. So that cannot be understood, analyzed, reasoned out, cogitated by your dimension of intelligence. You have to accept it. It's not within this domain. But it happens that infinite God is capable of condensing him to a finite form, and that is called Sakar Ishwar, God with a form. Why is it necessary? Because we are human beings. If you want to establish a relation with another, then it is better for us, easier for us, convenient for us to have some finite form. रूप चाहिए, नाम रूप चाहिए, जिसके साथ हम प्यार कर सके. निर्गुण निराकार फॉर्मलेस लाइक एयर और ईथर और वाटर, उनके साथ व्यक्तिगत रिश्ता बनाना आसान नहीं है. असंभव नहीं है, आसान नहीं है. इसीलिए in order to facilitate us that we may be able to love God, God takes a form, even a human form. That is called avatar. God takes a human form, like Ramachandra, Krishna, Buddha, Chaitanya, Sri Ramakrishna. एक एक फॉर्म लेके आविर्भूत होते हैं ताकि भक्तगण उनको प्यार कर सके. Now the Bhakti school said that प्यार जो करेंगे, प्यार बहुत किस्म से किया जाता है. We have to choose. हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन भावना से प्यार करेंगे. संसार में हम प्यार करते हैं, लेकिन प्यार का रिश्ता विभिन्न किस्म का होता है. कैसे? जैसे माँ को बच्चा के साथ प्यार, संतान प्रेम, वात्सल्य प्रेम बहुत गहरा ही होता है. दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार होता है माँ के संतान के साथ, माँ का समर्पण. दिस इज वन टाइप ऑफ प्रेयर, दैट इज कॉल्ड वात्सल्य प्रेम. देयर इज अनदर प्रेयर इज फ्रेंड, सख्य भाव, सहेली, बंधु मित्र का साथ, बंधु का साथ जो प्रेम है वो बहुत गहरा होता है. और एक है कि प्रभु और नौकर का संपर्क. जो भृत्य होता है, नौकर होता है, वो भी प्रभु का बहुत प्यार करते हैं ताकि प्रभु का कोई कष्ट ना हो. जो हनुमान जी उसका उदाहरण है. विद्यावान गुणियत राम काज करीबी को आतुर रहता है कैसे हम राम का सेवा कर सके. सेवा करने में उनका जीवन में आनंद है और कुछ नहीं चाहते. हनुमान जी रामचंद्र जी से कुछ अपेक्षा नहीं है. उनका जीवन का लक्ष्य है हम प्रभु को सेवा कर सके, सेवा करके हम धन्य हो जाए.
सेवा करते हुए हमारा वो प्यार है, सेवा करना ही प्यार है। हम दुनिया में समझते हैं हमें कुछ मिलने पर प्यार होता है, नहीं। इन द प्यार वेयर देयर इज आवर दैट रिलेशन ऑफ लव इज नॉट लव, इट इज मार्केटिंग, व्यापार है। हमारा प्रेम सच्चा नहीं है, ये व्यापार है। वी लव यू सो दैट वी कैन गेट समथिंग इन रिटर्न। हमें क्या मिलेगा, मिलने का चिंतन पर, जहाँ मिलने का चिंतन वो प्यार नहीं है, वो व्यापार है, बिजनेस, गिव एंड टेक। प्यार में गिव एंड टेक नहीं रहेगा। हम आपको प्यार करते हैं बस, फुल स्टॉप, आई डोंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न। तो भगवान के साथ ऐसे एक रिश्ता बनाना जरूरी है। जैसे माँ संतान को प्यार करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, ये नहीं सोचते हैं बच्चा में क्या देंगे। बच्चा क्या देंगे, बच्चे को देने का नहीं है। बच्चा इज वन वे रिसीविंग, बट इन ऑल अदर रिलेशंस अनफॉर्चुनेटली एक्सेप्ट द रिलेशन ऑफ ए मदर एंड चाइल्ड, इन ऑल अदर रिलेशंस इन आवर वर्ल्ड देयर इज ऑलवेज ए दिस एक्सपेक्टेशन ऑफ हमें क्या मिलने वाला है, हम इनसे प्यार करेंगे, इनसे क्या मिलेगा, कैलकुलेट करते हैं। जहाँ कैलकुलेशन में प्यार नहीं है, यहाँ पर सच्चा रिलेशन। वो कह रहे हैं अगर ईश्वर को जानने चाहते हो, साधन करो और एक रिश्ता बनाओ, इज नेसेसरी। यू हैव टू एस्टेब्लिश ए रिलेशन। वो भी रेस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट हियर इन दिस टॉपिक, क्योंकि भक्ति स्कूल में, भक्ति मार्ग में 5 किस्म का रिश्ता का बात कहा गया है। शांत्य, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, एनी वन विल डू। भक्ति स्कूल में होता है। शांत भाव है ऋषिज का, ऋषियों का, जो कि भगवान को आराधना करने चाहते हैं, भगवान के साथ दूरी रखते हुए। शांत भाव में दे डू नॉट कम क्लोज टू गॉड। भगवान को श्रद्धा करते हैं, सम्मान करते हैं। ऋषिगण दूर से, सूर्य भगवान सुबह से उपासना कर रहे हैं। ऋषिगण सूर्य के साथ गले मिलाने के कोई मतलब नहीं है। सूर्य रिमेन्स वेर एवर ही इज। आई ऑफर टू द मॉर्निंग सम जवा कुसुम संकाशम कश्यपेयम महादूतिम भांतारीम सर्व पापग्न प्रणतोष्प दिवाकरम। ऐसी स्तुति करते हैं, स्तव करते हैं। सूर्य, चंद्र, देवता, इंद्र दूर से स्तव करते हैं, प्यार करते हैं। दे डोंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न। तो दूर से ये दुनिया में भी चारों ओर भगवान का विराजमान है। ईशावास्यमिदं सर्वम, सबको भगवान का प्रकाश देखते हुए उनको पूजन करते हैं, सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं। ये शांत भाव है। दूसरा है दास्य भाव। इसमें दूरी नहीं है, करीबी है। दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ लव इज विद इन माई रीच। हमारे जो पकड़ के भीतर है, जिसको साथ हम रिश्ता बनाने चाहते हैं, जिसको साथ हम प्यार करने चाहते हैं, माई लव, जिसको whom आई want to love is within my reach, and the relation is between like husband, like master and servant. प्रभु भित्र का संपर्क, दास, मनी व दास। तो यूजुअली क्या होता है, the servant he serves in lieu of some pay. कोई रेमुनरेशन मिलेगा, कुछ तनख्वाह मिलेगा तभी ना सर्विस होगा। लेकिन जब ये प्रेम का दासत्व होगा, वहाँ पर कुछ मिलने का अपेक्षा नहीं है। मिला तो ठीक है, नहीं मिला तब भी ठीक है। लेकिन भगवान का जो नियम है, अगर कोई भगवान को सेवा करते हैं, उसको मांगने का जरूरत नहीं है। बिना मांगने से ही उनको जो जितना हो देना चाहिए तो उससे ज़्यादा ही मिलेगा, मांगने से कम हो जाता है। देयर इज अ लॉ। बट एनीवे, व्हेनेवर वी एस्टैब्लिश ए लविंग रिलेशन विद गॉड एज ए सर्वेंट एंड मास्टर, then that relation will become a loving relation,
when we do not have any expectation. But normally साधारणतया हम लोग जब भगवान को जो प्रभु मान के चलते हैं, हम भगवान को पूजन तो ज़रूर करते हैं, सामान भी चढ़ाते हैं, लेकिन उसके साथ हमारा भी एक लिस्ट जोड़ देते हैं। मैं आपको सेवा कर रहा हूँ ताकि हमें ये चीज़ मिलना चाहिए, हमारा नौकरी हो जाना चाहिए, हमारा शादी हो जाना चाहिए, हमें मकान चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए। भगवान के साथ हाथ जोड़ करके खोल के हम भिखारी के जैसे प्रार्थना करते हैं, वो प्यार नहीं है। देयर इज नॉट प्यार, उससे चलेगा नहीं। जब हनुमान जी हमारा आदर्श है, वो भगवान राम को प्यार करते हैं, परिबंध कुछ नहीं चाहते। अगर जब तक हमें वो सच्चा प्यार नहीं होगा, तब तक हम आध्यात्मिकता का उन्मेष नहीं होगा, तब तक हम इस जगत में ही फंसे रहेंगे। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें प्यार का रिश्ता बनाना जरूरी है। तो यहाँ पर बताया कि दास्य भाव, ठाकुर ने अनुमोदन किया, एक शांत भाव और एक दास्य भाव, दोनों रिश्ता के कोई भी अपना लो, टेक एनी वन ऑफ द टू, तभी भगवान को एट्रीब्यूट जान पाओगे। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, बिकॉज हियर ही हैज डिलीटेड द थ्री अदर्स, बाकी तीन को अलग कर दिया। जो इन भक्ति स्कूल वी हैव गॉट थ्री मोर रिलेशंस, वन इज द लविंग रिलेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स। श्री कृष्ण का जो गोपाल बालक है, राखाल बालक, दे आर वेरी क्लोज, उन लोग दे आर फ्रेंड्स विथ ईच अदर। श्रीदामा, सुदामा, वसुदामा सब श्री कृष्ण के सखा है, उदाहरण दिया है। दे थिंक गॉड इज देयर वेरी ओन, they feel the same, the identification। श्री कृष्ण का वो पसीना निकल रहा है, वो देखते हुए गोपालक का पसीना निकल जा रहा है, देखते हुए उनका कष्ट हम दूसरे कष्ट का महसूस कर रहा हूँ। सिंपैथी, दैट फेलो फीलिंग, जो समव्यथा, तभी बंधु का रिश्ता होता है। दिस इज दी सख्य भाव एंड वात्सल्य भाव, जिसे मैं बताया, जननी का संतान के प्रति जो आकर्षण, माँ यशोदा का बाल गोपाल के लिए जो आकर्षण है, वो है वात्सल्य भाव। बहुत अच्छा भाव है वो, बच्चा से कुछ उनका मिलने का कुछ नहीं है। और सबसे महत्तम है मधुर भाव, जो कि भगवान को अपने जो पति रूप से या पत्नी रूप से समझना, टू कंसिडर गॉड एज माई बिलावेड, प्रेम का संपर्क है। जैसे श्रीमती राधिका और श्री कृष्ण का रिश्ता, नाउ ये बड़ा उच्च भाव है। श्रीमती राधिका श्री कृष्ण का लव, ये दिस इज नॉट ए रिलेशन बिटवीन ए मैन एंड वुमन, जो नॉर्मल हम समझते हैं कि एक पुरुष और नारी के भीतर जो रिश्ता होता है वो मधुर भाव है। बिल्कुल नहीं। मधुर भाव में कोई जो प्यार होगा वो देहातिरिक्त होगा, बियॉन्ड बॉडी कॉन्शियसनेस। वी हैव टू transcend our sexual idea before entering into the relation. Here, neither Sri Krishna is a male person nor Sri Radhika is a female. They are pure spiritual beings. They transcend their body consciousness and their spirit is united. It's a very high thinking, Madhur Bhav, where the two souls get united, and there the idea of give and take, hope and reward are completely redundant. No question. They become one together. So Sri Ramakrishna say those things are obliterated. इधर नहीं होगा। कारण the normal ordinary human beings cannot adhere to such high ideals of life. We cannot even think. So let us not get into this rishta of the Madhur Bhav or Vatsalya Bhav or Sakhya Bhav. We should restrict ourselves
to this this Dasya Bhav and Shanta Bhav. So Sri Ramakrishna says one has to have one of these two attitudes and try to make a loving relation with God. This is one requirement. Second requirement is one should be engaged in spiritual practice. With these twofold method, then one can aspire to know about God. Attributes means ईश्वर का गुण क्या होता है? What is his guna rashi? He is all love. He is prema sarup. What is another? He is jnana sarup, daya sarup. उनका दया, उनका ज्ञान, उनका प्रेम, उनको ऐश्वर्य, ये सब कुछ समझने के लिए हमें साधन करना चाहिए और भगवान के साथ एक रिश्ता बनाना चाहिए, तभी हो पाएगा. श्री रामकृष्ण सेज दैट ओनली देन वी कैन प्रोसीड. नाउ इधर में जो भक्तों का लिए ये दास्य भाव है. नाउ व्हाट हैपेंस विद द ज्ञानीज, दोज हु डिसलाइक द गॉड विथ फॉर्म, जो निराकार ब्रह्म को उपासना करते वो भी चलेगा. इट्स नॉट दैट इट इज कंपल्सरी दैट वी हैव टू हैव ए साकार उपासना. द ऋषिज हैव निराकार आइडिया. हियर ही इज सेइंग दैट ऋषियों का शांत भाव था, ज्ञानियों का भाव क्या है जानते हो? स्वरूप की चिंता करना. तो स्वरूप का चिंतन, आत्मचिंतन, ये भी एक मेथड है. आइदर यू एस्टेब्लिश ए पर्सनल रिलेशन विद गॉड और यू थिंक अबाउट योर सेल्फ. डू नो द एटीट्यूड ऑफ द ज्ञानीज? इट इज टू मेडिटेट ऑन वन सेल्फ. आत्मचिंतन, आत्मा में मनोनिवेश, थिंकिंग अबाउट वन सेल्फ, दैट इज द अलौकिक ज्ञान. उसमें भी चलेगा. आइदर यू फॉलो द पैथ ऑफ ज्ञाना और पैथ ऑफ भक्ति. सो देन व्हाट हैपेंस दैट श्री रामकृष्ण आस्क्स व्हाट इज योर एटीट्यूड. Most probably he asked this to M, the recorder of the Gospel of Sri Ramakrishna. He is asking कि तुम्हारा क्या भाव है? What is your attitude? Now, the devotee did not answer. Devotee means here Master Mahasaya. Most probably, Sri Ramakrishna says, तुम्हारे दो भाव है, स्वरूप चिंता और सेव्य सेवक का भाव है. क्यों? ठीक है क्या नहीं? देन श्री रामकृष्ण इज मेकिंग ए कॉम्बिनेशन. ही सेड वन ऑफ द टू मेथड्स विल डू. आइदर यू मेक ए दिस फॉर्मलेस रिलेशन विद गॉड और यू मेक अनदर रिश्ता विथ फॉर्म. टू डिफरेंट वेज. बट हियर ही सेज that both can be combined also, as here the devotee, like most probably M had, Master Mahasaya, एक ओर से भगवान के निराकार साधन भी करते थे, दूसरा ओर से भगवान का प्रभु समझकर सेवा भी करते थे. Though he didn't say, but he is having this understanding with Sri Ramakrishna, he found out, ये अंतर्जामीन है, he found out that he has both the relations. Now, he is asking, is it true? Isn't it true? Now, Bhakta being embarrassed, he says, yes sir. Pakad liya. Though he didn't say. You have two attitudes. You meditate on your own self and also cherish towards God the attitude of a servant. Am I not right? Now please note that these two attitudes are contrary to each other, परस्पर विरोधी.
On the one attitude, you think God is formless and you meditate on Him in Atman. And same time, you are having another attitude where God is your master with a form. आपका प्रभु है, आप वो प्रभु का एक दास रूप से संपर्क करने चाहते हैं. तो how do they do it? While meditating on God, ध्यान के समय में भगवान के साथ मिल जाते हैं. और जब कर्म का समय में भगवान के साथ दूरी रखते हुए भगवान को एक नौकर समझ के अपने को अलग रखते हैं. So the same thing happened with Hanuman ji also. Mahavir ji, he says that the same question is asked Hanuman ji, what is your attitude with Ramachandra? Then he said, कि देह बुद्ध्या दासो अस्मि जीव बुद्ध्वा तदंशकः आत्मबुद्ध्या तदैवाहम इति में निश्चिता मतिहि. This is Hanumanji's reply. Because we do not remain in one level all the time. He says, when I am in the having body consciousness, I am the body. Most people, I know that I am the body, I have the body. That's not the end of the thing, but whenever I think that I am a body, then I am your servant. Deha buddhya daso asmi, I am your servant. God is my master and servant. But all the time I do not have this deha buddhi. Sometimes we have the atma buddhi. We transcend the sharir. Then उस समय में हम हमको आत्मा समझते हैं. तब क्या होता है? तदंशकः, I am a part, you are the whole. That part whole, this is the Vishishta Advaita philosophy, that God is the sum total of all of us. So we are a part of the entire God's existence. So we are inseparable from God. Like a cell of my body is inseparable from the entire body. Body consciousness pervades to all the cells. Similarly, God pervades to all of us, and we are that indispensable particle in the body of God. This is all right. There is no difficulty. And third, क्या बोल रहा है? आत्म बुद्धिया तभी वाहम. But when I think I am the self, not jiva, then I become merged with you. Then ये जो एटीट्यूड बोला है, आप भगवान के साथ तल्लीन हो जाते हैं. And you become merged. That is Shantava. You become merged with God. So rishis used to have this attitude. They used to be merged with God, having this Shantavava, and also they will meditate on Him. This is the idea of the rishis. Now, so this topic, Sri Ramakrishna will elaborate further, which will take up in our next Sunday class. Niranjanam nityam ananta rupam bhaktanukampa vigraham vai Ishavataram parameshamidyam tam Ramakrishnam sirasa namama. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Shri Ramakrishna Arpanamastu. We'll close now with the chanting of the Lord. Please join with me. सब एक साथ भगवान का नाम संकीर्तन करें 2 मिनट के लिए. हरि ओम राम कृष्ण, हरि ओम राम कृष्ण, हरि ओम राम कृष्ण, हरि ओम.
Hari Om Ramakrishna, Hari Om Ramakrishna, Hari Om Ramakrishna, Hari Om. Hari Om Ramakrishna, Hari Om Ramakrishna, Hari Om Ramakrishna, Hari Om. Hari Om Ramakrishna, Hari Om Ramakrishna, Hari Om Ramakrishna, Hari Om. Hari Om Ramakrishna, Hari Om Ramakrishna, Hari Om Ramakrishna, Hari Om. Hari Om Ramakrishna, Hari Om Ramakrishna, Hari Om Ramakrishna, Hari